Hey you guys, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। वेल एज यू नो कि हम लोग अभी दुबई में हैं और आज हमें यहाँ पर आई थिंक 5 नाइट्स हो गई हैं। टुडे वी हैव टू वेकेट दिस होटल एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स जुमेरा साइड इन अनदर होटल। तो जल्दी सब कुछ हम लोग कर रहे हैं एंड आई विल टेल यू हाउ द डे गोज, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं एंड अभी मैं बच्चों को फट से टब में डाल रही हूँ ताकि नहा के दोनों रेडी हो जाए। एंड मीनवाइल वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैकिंग। Our pickup from the next hotel is at 12:30 and it's already 11:30 right now. Are you back, baby? Going on, work in progress. अरहम, आपकी पैकिंग हो गई बेटा? दिखाओ मुझे। Everyone's ready and packed to leave. Mohit has gone to have a quick shower और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बिकॉज हमारा जो पिकअप है ड्यूक्स होटल का वो आ चुका है और चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। कौन बज रहा है? Pick it up, pick it up, pick it up. Yes. Mama, you. Yes? Would you please ask him to wait another 5 to 7 minutes? Thank you. Are you ready to leave? Pickup car is here. So the good thing is कि बारिश रुक गई है बिकॉज आज हम लोग एक बीच रिजॉर्ट में रहने जा रहे हैं एंड वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ बीच डे। पता नहीं पानी में जा पाएंगे कि नहीं, बट एटलीस्ट रेन हैज स्टॉप्ड सो दैट्स अ गुड थिंग। The Palm Hideaway Yes. and really hoping to get the best room here. So yay! We finally did get the sea view room Yes. that we wanted, Yes. and I cannot wait to go and look at it and show you guys what the room looks like. Are you ready to go to the beach? Yeah. चलो let's go. Okay, so we are going to go to the beach. मैंने जैकेट भी पहनी है, बीच वेयर भी पहना है बिकॉज पता नहीं ठंड होगी कि गर्मी होगी। Ready for everything. चलो guys. Let's go. You take the key card. ये एक बीच शॉप है यहाँ पर होटल में एंड वी वांट टू पिक अप बीच टॉयज फॉर द किड्स बिकॉज ठंड काफ़ी है। आई थिंक पानी में जाना तो एडवाइजेबल नहीं है बच्चों के लिए, बट एटलीस्ट दे कैन प्ले ऑन द बीच, मिट्टी में खेल सकते हैं। और मुझे कुछ हैट्स भी पसंद आ गई हैं, वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है, बाहर से ले लिया होता तो बेटर होता, लेकिन मिला ही नहीं बाहर कुछ। अरम ने अपनी कार्स जो हैं वो एक बैग में पैक की थी जो कि वो रूम में भूल गया है, तो अभी मोहित वो लेने जा रहा है। हाउस द हैट लुकिंग? आई डोंट लाइक इट। बदमाश मम्मा को इधर ही चेंज क्यों कराती है? क्यों इधर चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, अंकल बोलेंगे मुझे बाथरूम में चेंज करता है।
have fun on the beach. अभी ठंडी लग रही है. Can you tell me how was your beach day? Nice. Did you enjoy? Yeah, but not in the cold part. Oh. इतना अच्छा सनसेट और हम लोग जा रहे हैं वापस रूम में बिकॉज बच्चों को बहुत ठंड लग रही है एंड आई वांट देम टू शावर बिफोर डिनर टाइम. ऑल्सो ऐसा मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बीच पे आई हूँ और पानी में नहीं गई हूँ बिकॉज मेरे को बहुत ठंड लग रही थी. आई डोंट नो हाउ द किड्स डिड इट बट इट्स नाइस. वापस आ गए हैं. आई मीन बीच से वापस आ गए हैं और मैं आपको अपना रूम दिखाना चाहती हूँ. सो प्लीज कम इन. दिस इज एक्चुअली द हॉल. लेकिन ये सोफा कम बेड है और इसको हमने खोल दिया है सो दैट द किड्स कैन स्लीप हियर. एंड लुक एट दिस डाइनिंग टेबल एंड लुक एट व्हाट दे डिड फॉर अस. Look at my one. दिस लुक्स डिलीशियस. Can we eat that? Eat it? I'll eat. और ये एक छोटा सा किचनट है. सो दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ 1 bedroom अपार्टमेंट. वो 2 bedroom अपार्टमेंट था, ये 1 bedroom है तो छोटा है. Mama, can eat the chocolate. या बट आई वांट टू टेल यू कि वो वाला बड़ा था मगर ये वाला छोटा होने के बावजूद इट्स फार मोर एक्सपेंसिव एंड फार मोर प्रीमियम. तो यहाँ पे भी सारी चीजें वही हैं. कॉफी मशीन है, केटल है, फ्रिज है, कुकिंग रेंज है, माइक्रोवेव है and all of that. We Okay. cannot eat this. No, we cannot eat that. The smiley. And this is a powder bathroom which I'm going to just close. Can we eat this? और यहाँ पर है. We can eat everything. No, we cannot eat everything. Eat the cookie better. Don't eat that. You can eat this. Too much sugar for You this. have green, Mama. And this is a balcony here. अभी बिल्कुल भी व्यू नहीं नजर आएगा लेकिन यहाँ से मरीना का व्यू है. Not the best thing, but one of the best things is कि हमारे होटल के एकदम सामने across the road there's a mall, so we can shop more. No surprises there. Ah, there's a bed here. Oh my god. There's another balcony over there. और यहाँ पर है एक bathroom. और अब हम लोग सब जा रहे हैं डिनर करने बाहर. अब मॉल पास है तो you know we thought we'll just hop across to the mall and just have dinner. हाँ, no shopping today. मुझे देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है दुबई में. तो मैं मॉम से आज बात करी थी. मॉम कह रही थी दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर है और वो 5 स्वेटर पहन के बैठी हुई हैं. बट यहाँ पर इन अबाउट 20 degrees आई एम फीलिंग रियली कोल्ड. आई एम रियली एंजॉइंग दिस होल वॉक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दुबई. And now we are heading back to the hotel. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to Chhavi. This is all of us signing out. Love and peace.